Hello people and welcome to Shifting Gears and welcome the 2020 Hyundai Venue IMT Intelligent Manual Transmission. अब ये जो वेरिएंट मेरे साथ आज है, this is the Venue Turbo Petrol of course. This is the SXO trim with the dual tone paint option and this is the Sport trim. ये Sport trim जो है नई लॉन्च हुई है and this comes with the IMT gearbox. अगर इस Hyundai Venue IMT के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो आप ये इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स खरीद सकते हो फ्रॉम रुपीज 9.99 lakhs एंड रेंजिंग अप टू 11.20 lakhs. ऑल दीज प्राइसेस आर एक्स शोरूम और आपको टोटल 4 वेरिएंट्स मिलते हैं विद द IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन. तो सबसे पहले तो चेक आउट दिस न्यू ग्रे पेंट स्कीम ओवर हियर एंड बिकॉज दिस इज द स्पोर्ट ट्रिम ऑफ द IMT ट्रांसमिशन आपको काफ़ी सारे रेड एक्सेंट्स भी दिखाई देते हैं. सबसे पहले जब आप गाड़ी को सामने से देखते हो यू आर गोइंग टू नोटिस दैट यू गेट अ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल and you have this red accent on the grill as well. Looks pretty cool I think and it adds a nice sporty touch. आप देखोगे बाकी सभी चीज़ें जो हैं on this Hyundai Venue they are the same as the Hyundai Venue has been over here in the Indian market. You get LED DRLs, you get a projector headlamp, the turn indicator is mounted up top and you have a projector fog lamp as well. और साथ साथ आपको यहाँ पे एक skid plate effect भी मिल जाता है on this Hyundai Venue compact SUV. Now this is the dual tone paint option. आप देखोगे कि ग्रे पेंट स्कीम के साथ आपको ब्लैक रूफ दिया है और यहाँ पे ये जो रूफ रेल है दिस इज ऑल्सो इन अ डार्क थीम एंड यू गेट दैट रेड एक्सेंट ऑन द रूफ रेल एज वेल. दिस रेड एक्सेंट you can also notice on the wheel arches at the back, on the wheel arches on the front and along the body cladding area on the side profile. This really looks cool और ये काफ़ी अलग दिखता है, काफ़ी हटके दिखता है और इससे genuinely एक स्पोर्टी टच ज़रूर मिल जाता है इस गाड़ी को. You're going to notice that the alloy wheels are still the same. They are very snazzy looking and these are 16-inch rims on the Hyundai Venue. Because this is the sport trim, the sport variant, आप यहाँ पे देखोगे इस पिलर पे sport की branding कर रखी है. And then when you move to the rear end design of this Hyundai Venue compact SUV, आप notice करोगे कोई भी ज़्यादा changes नहीं हुए हैं. You have the standard branding and badging over here on the tailgate. Turbo की branding ज़रूर मिल जाती है because the IMT gearbox is only available with this turbo petrol engine. ये number plate housing जो है वहीं पे आपका reverse parking camera भी position किया गया है and you obviously have this silver skid plate effect. So this is how it looks on the outside and of course because this is the IMT transmission, Hyundai अपने front right fender पे gearbox जो है उसे define करते हैं. You can notice the IMT badging over here on the front fender. अगर आप नॉर्मल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स या DCT वेरिएंट्स खरीदते हो वो सभी ब्रांडिंग भी यहीं पे दी जाती है. दिस इज देयर वे ऑफ डिनोटिंग विच पर्टिकुलर वेरिएंट यू आर लुकिंग एट. सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स आई रियली लाइक इट एंड वन थिंग विच यू माइट मिस इफ यू डोंट लुक क्लोजली, ये जो फ्रंट ब्रेक कैलिपर है ये भी रेड पेंट किया है एंड दिस ऑल्सो डेफिनेटली एड्स टू द स्पोर्टी टच ऑफ दिस व्हीकल. बट देन there are some changes on the inside as well. ये जो Hyundai Venue IMT है in its sport trim आप देखोगे कि यहाँ पे जो seats हैं वो पूरी तरीके से नए हैं. in terms of the upholstery you are going to notice leatherette और fabric का यहाँ पे mixture दिया गया है. you can notice you have contrast red piping, you have white contrast stitching as well and the grey finish looks very nice and it looks very cool. आपके हाथों को to the touch response also it feels nice and premium. And you can notice there are these other subtle elements to give it a nice cool look, a nice cool feeling. इसके साथ साथ आप देखोगे कि इस Hyundai Venue में आपको ये D-cut steering wheel भी दिया है on this sport trim. This steering wheel we have also seen on the Hyundai Creta. आप देखोगे कि यहाँ पे आपको red contrast stitching भी दी गई है and that also looks very nice. Also these red accents you can notice on the AC vents and apart from the AC vents you can also notice them on the AC controls. Gear selector जो है उसके नीचे जो लेदर रैप है वहाँ पे भी आप ये रेड एक्सेंट्स देख सकते हो एंड ऑफ कोर्स द रेयर सीट्स आर द सेम. यू कैन नोटिस यू गेट द सेम आर्ट लेदर एंड फैब्रिक अपहोल्स्ट्री विद रेड पाइपिंग एंड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग. सो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी प्रीमियम दिखाई देता है एंड इवन द डोर ट्रिम्स हैव दिस सॉफ्ट टच आर्ट लेदर मटीरियल एंड दैट ऑल्सो गेट्स दीज रेड एक्सेंट्स. लेकिन ये चीज़ इस Hyundai Venue IMT की खासियत नहीं है. The biggest highlight of this particular variant is that you get a manual gear selector but you do not have a clutch.
आपको एक ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने वाली फीलिंग मिलने वाली है, बिकॉज योर लेफ्ट लेग इज गोइंग टू बी एट ईज, कंफर्टेबल, डूइंग नथिंग ऑल द टाइम. But you can get manual control over the gearbox. So come up close and first look at the footwell area. You get the accelerator and brake pedal, but you do not get a clutch pedal. एक generous dead pedal यहाँ पे आप देख सकते हो, and you have those metal finishes on the pedals, the aluminum pedals. And then look at the gear selector. It is a standard manual gear stick over here. कोई भी changes यहाँ पे नहीं है. So if someone doesn't look at this particular Venue very keenly, उन्हें शायद लगेगा कि ये एक normal manual gearbox variant ही है, but it is actually a very cool mix between automatic and manual. चलिए अभी चला के देखते हैं how exciting is this Hyundai Venue IMT. Is it as convenient as an automatic? Is it as engaging as a manual? क्या आपको ये गाड़ी तेज चलाते वक्त पसंद आएगी? क्या आपको ये गाड़ी सिटी में चलाते वक्त पसंद आएगी? Is it going to be convenient in your ownership cycle? And if you will appreciate buying this particular model in the Hyundai lineup. Now when you step inside this Hyundai Venue IMT, from the driver's point of view, not much has changed in terms of what the Venue used to be, but of course this D-cut steering wheel with these silver accents and contrast stitching looks nice. It has a flat bottom design, तो आप जब इसे grab करते हो, जब आप इसे hold करते हो, it does feel like a premium car. आप देखोगे यहाँ पे ये जो speedometer cluster है, even that remains the same. Check it out. You have the normal data that is shown inside over here, and this particular slot over here जहाँ पे आप अभी न्यूट्रल एंगेज किया हुआ है ये देख रहे हो, it also gives you a गियर इंडिकेटर. तो आपने अपशिफ्ट करना चाहिए या डाउनशिफ्ट करना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे बताया जाता है. एंड व्हेन यू आर ड्राइविंग अराउंड इन दिस Hyundai Venue IMT, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4th गियर में या 5th गियर में या आप किसी भी एक हायर गियर में ये गाड़ी चलाते वक्त एक स्टैंड स्टिल पे आ जाते हो, से फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम एंड हॉल्ट एट अ सिग्नल एंड इफ यू डू नॉट डाउन शिफ्ट, द सिस्टम इज गोइंग टू गिव यू एन ऑडिबल बीप. आपको वो क्लियरली सुनाई देगी और MID में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर भी की जाएगी दैट यू हैव टू डाउन शिफ्ट. You are probably in a higher gear, so that is a very good touch which is going to keep you aware, because काफी बार ऐसा होने वाला है that when you are driving this you are going to get confused that you are just driving a normal automatic and you will actually forget to downshift. So I really appreciate कि Hyundai वो function इस गाड़ी के साथ आपको ऑफर कर रहे हैं, so that eventually you will get used to it and then you will start enjoying this gear stick, this IMT gear selector. अब ये जो गियर सिलेक्टर है इनसाइड द Hyundai Venue IMT, इसे Hyundai कह रहे हैं TGS, ट्रांसमिशन गियर सिलेक्टर. इसे जब आप इस्तेमाल करते हो, चेक दिस आउट, राइट नाउ आई एम नॉट इवन प्रेसिंग द ब्रेक पेडल, आई एम ओनली गोइंग टू स्लॉट दिस गियर सिलेक्टर. सो स्लॉटिंग इट इन फर्स्ट, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ब्रेक पेडल प्रेस करके ही गियर जो है वो सिलेक्ट करना है. राइट नाउ द हैंड ब्रेक इज ऑन एंड व्हेन आई रिलीज द हैंड ब्रेक, आप नोटिस करोगे कि गाड़ी जो है इट स्टार्ट्स क्रॉलिंग. चेक दिस आउट वन मोर टाइम. आई एम गोइंग टू कम टू अ स्टैंड स्टिल. अभी गाड़ी न्यूट्रल में है. नाउ आई एम नॉट प्रेसिंग द एक्सेलरेटर, आई एम नॉट प्रेसिंग द ब्रेक पेडल, आई एम ओनली गोइंग टू स्लॉट दिस कार इन फर्स्ट गियर. चेक दिस आउट, engaged first and it starts crawling. So this is going to be very very useful and very very handy जब आप ये गाड़ी जो है सिटी ट्रैफिक में इस्तेमाल करते हो, चलाते हो. So you don't have to add too much of stress to your overall driving. This is something that you are going to appreciate. Check this out again. Now I'm going to slot it in reverse, and as soon as I engage it, no throttle input, did not press the brake pedal and the car is reversing. And of course you can check it out, यहाँ पे आपको dynamic grid lines भी मिल जाते हैं inside in this Hyundai Venue. So this IMT intelligent manual transmission is definitely quite cool. You are going to be full time comfortable in this car because you have nothing to do with your left leg. Gear changes करके आप ज़्यादा enjoy ज़रूर करने वाले हो because you have that extra control over the engine and gearbox, and of course it has a turbo petrol motor. तो चलिए अब चला के देखते हैं how exciting is this Hyundai Venue IMT, and let me tell you everything about the performance and if this is going to satisfy your need for speed, because this is their sport trim.
ऑल्सो यू कैन नोटिस कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वेरी क्लियरली लिखे गए हैं ऑन द ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर इनसाइड द वेन्यू IMT। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अबाउट स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस कॉम्पैक्ट एसयूवी। Hyundai Venue जब से इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है, इट हैज़ ऑलवेज बीन अवेलेबल विद पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स। अब आज जो वेरिएंट में चला रहा हूँ, द टर्बो पेट्रोल IMT, इस Hyundai Venue के साथ आपको मिलता है एक 998 सीसी 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल मोटर जो प्रोड्यूस करता है 120 PS की पावर एंड 17.5 kgm का टॉर्क। और इसके साथ आपको ये इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, एक 6 स्पीड IMT गियरबॉक्स मिल रहा है। The other two engine options that you get with the Hyundai Venue include a 1.2 liter naturally aspirated petrol which produces 83 PS of power and a 1.5 liter diesel motor which is also a 4-cylinder turbocharged block producing 100 PS of power. तो अभी मैं ये Hyundai Venue IMT चला रहा हूँ out on the Mumbai-Pune expressway. I am effortlessly cruising. 6th gear मैंने engage कर रखा है. The cruise control is on. And at this particular instance, engine RPM is at 1800 and this is a very relaxed state of tune. इस सिचुएशन में मैं जब ये गाड़ी लेके से फॉर एग्जांपल हाईवे ड्राइव करना चाहता हूँ, engine noise is absolutely zero inside the cabin. आपको बिल्कुल भी engine note सुनाई नहीं देगी. This is going to add to your stress-free driving experience. And the good thing is ज़्यादा wind noise, wind buffeting भी आपको सुनाई नहीं देगी. And this definitely will keep you happy inside the cabin of this compact SUV. लेकिन ये जो Hyundai Venue IMT है, इसकी खासियत है कि इसमें आपको क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है और आपको मैन्युअली गियर चेंजेस करने का मौका मिल जाता है। तो चेक दिस आउट। राइट नाउ आई एम टर्निंग ऑफ द क्रूज कंट्रोल एंड नाउ आई हैव kept my right foot on the accelerator pedal and I'm not going to move it. So my pedal stays fixed, my right foot on the pedal stays fixed and still I can make gear changes. और ये जब मैं करता हूँ, इंजन जो है गियर चेंजेस करते वक्त ओवर रेव नहीं होती है. इट डज ड्रॉप द throttle, it does drop the RPMs when you are changing these gears, when you are shifting these gears. So check this out one more time. Right now गाड़ी जो है 4th gear में engaged है, dropping it to 3rd and then this turbo petrol motor does come alive. तो say for example आप एक बार 2000 RPM के ऊपर इस engine को rev कर देते हो, it does give you a very good punchy performance and you are going to enjoy it. And thanks to no clutch, thanks to this IMT, this is going to be very engaging. तो अभी ये देख लीजिए, I can simply downshift without having to worry about managing and modulating the clutch, and it is quite a thrilling experience. It is quite a different experience. नॉवेल्टी फैक्टर की वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज आप सिंपली गियर स्टिक जो है, ये TGS जो है, ट्रांसमिशन गियर सिलेक्टर जो है, इसका इस्तेमाल करके यू कैन ड्राइव इन द आइडियल पावर बैंड, इन द आइडियल रेव रेंज दैट यू लाइक व्हेन यू वांट टू ड्राइव अराउंड इन दिस वेन्यू IMT. अभी जब मैं आसानी से इस गाड़ी को चलाता हूँ, व्हेन आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्राइव इट फास्ट, इट इज़ वेरी रिलैक्स्ड एंड देयर आर नो टैंट्रम्स एट ऑल. अगर गियर चेंजेस की बात करूं तो से फॉर एग्जांपल जब आप हाईवे पे इस तरीके से गाड़ी चला रहे हो एंड व्हेन यू आर चेंजिंग गियर्स, इट फील्स जस्ट एज नेचुरल एज एनी अदर मैनुअल गियर बॉक्स डज, एंड दैट अगेन इज अ वेरी गुड थिंग. तो कोई एडिशनल चीज जब आपको नहीं करनी पड़ रही है इन दिस कार, you will just get accustomed to this new gearbox pretty soon. लेकिन कभी कभी ऐसा ज़रूर हो सकता है that subconsciously you are going to forget that you have to, make those gear changes because this is an IMT. You will just come to a standstill and you will be in a higher gear, and then that system, that onboard computer is going to prompt that you have to downshift and stay in the ideal gear. अब ये एक टर्बो पेट्रोल मोटर है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस गाड़ी का माइलेज. आज हम इस गाड़ी को काफ़ी तेज चला रहे हैं. वी आर रियली एंजॉइंग दिस IMT गियरबॉक्स. इट डज फील नाइस एंड स्पोर्टी एंड आई एम रियली हैविंग अ लॉट ऑफ फन. मेरे आज के ड्राइविंग एक्सपीरियंस में मुझे 12 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज मिला है. कंपनी का क्लेम है दैट द ARAI रेटेड एफिशिएंसी फॉर दिस Hyundai Venue IMT इज गोइंग टू बी ओवर 18 kmpl, और वो आपको मिल भी जाएगी जब आप लॉन्ग ड्राइव्स पे निकल जाते हो.
And even right now when I'm driving out on the highway, the fuel efficiency is increasing by every kilometer that I'm driving. So in terms of this car being economical, it will be, and you will like it. Because it is a turbo petrol motor, you get a good torque surge as well, and it gets a good thumbs up from my end. Abhi, I'm going to come to a standstill, and then I'm going to try and drive this car fast. I'm going to drive this car pedal to the metal. So I'm driving off to the shoulder right now at 0 km/h. और ध्यान से सुनिए ये बीप. अभी 6th gear engaged था and I came to a standstill, and this MID is asking me to shift down. So this is going to be a very useful feature जब आप ये गाड़ी चलाते हो, especially in the city. Say for example 3rd gear से आप किसी स्पीड ब्रेकर के आसपास आके एकदम स्लो डाउन करते हो, या अगर आप एक सिग्नल पे आके रुक जाते हो, this feature will ensure that you drive around safely. इस Hyundai Venue में आपको किसी भी प्रकार के ड्राइविंग मोड्स नहीं मिलते हैं. You do not get a sport mode or eco mode. This is what you get, and now slotting it in first, and as soon as I release the brake pedal, the car does have a crawl function, but I am not interested in that. Off the brake and pedal to the metal, some wheel spin, shifting gears, and the engine revs over 6,500 RPM. It sounds glorious while you do that, and it is just as natural. जब आप ये गियर चेंजेस करते हो, आपको नोटिस होगा, आपको महसूस होगा that the system is engaging the clutch by itself. You will feel that, and you will appreciate that even more because you do not have to do that. And that is why this Hyundai Venue Turbo Petrol IMT is an exciting choice in this particular segment. I'm again going to slow down, again going to come to a halt, and I'm again going to try and demonstrate this to you. So listen to this. 4th gear right now, the MID is asking me to shift down, and now slotting it in first. And again, try and listen to the engine, try and listen to the engine note that you get inside the cabin. So in 3, 2, 1, full kick down, a little slow off the line. Engine revs close to 6,500 RPM in first gear, and I have to slow down because there are trucks on the road. But this is a lot of fun. Shifting gears without a clutch, you get a manual transmission, you can just hold on to the horses that this car has and play around and have fun. So ये gearbox जो है, ये IMT gearbox जो है, it is intelligent and it is a lot of fun as well. So I definitely like it. But there is a flip side to this IMT gearbox. अगर आपको एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ही चाहिए, जब आपको आपका लेफ्ट लेग जो है उसे आराम ही देना है, यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको मैन्युअली गियर चेंजेस करने ही पड़ेंगे. सो जब आप ये गाड़ी सिटी में चलाते हो, it is not going to feel like an automatic because you are going to have to make manual gear changes. There is no workaround solution to that. Of course, your left leg is going to be very, very grateful to you for buying this particular variant, but shifting gears is something that you will have to do. It is not at all odd, it is not at all hard, and I think it is a good mix of giving the potential buyers a sporty touch where they can play around with the engine and gearbox, especially with this turbo petrol variant, and to those who like a manual gearbox, who are not really all that enthusiastic, but they don't want to, stress out and drive with modulating the clutch inside the city limit. Now I'm again going to come to a standstill and I'm going to tell you the RPM range जब ये IMT gearbox जो है वो prompt करता है कि आपको upshift करना है. So let me explain that so that you get a good reference point. So now at 0 km/h, slotting it in first gear, और अभी मैं सिर्फ ब्रेक पेडल जो है वो रिलीज कर रहा हूं. एंड चेक दिस आउट, द कार स्टार्ट स्क्रॉलिंग. तो ये आपको सिटी ट्रैफिक में चलाते वक्त काफी अच्छा फीचर लगने वाला है. आपको थ्रॉटल पेडल प्रेस करने की जरूरत नहीं है. नाउ टचिंग द एक्सेलरेटर पेडल इन फर्स्ट गियर,
The engine is prompting me to upshift a little over 2000 RPM. Now in second gear, the engine is prompting me to upshift at the same a little over 2000 RPM. Right now in third gear, the speed is already over 40 kilometers per hour and the engine has asked me to upshift close to 1900 RPM. Right now in fourth gear, my throttle input is fixed. Pedal जो है वो मैं ज़्यादा modulate नहीं कर रहा हूँ. And the engine asked me to upshift again close to 1900 RPM to fifth gear. And right now, when I am driving it in the fifth gear, the engine is asking me to upshift again at the same close to 1800-1900 RPM mark. और जब आप ये गाड़ी चला रहे हो, if you are close to 60 kilometers per hour of speed, you can slot it in sixth gear. उस speed पे आपको engine जो है prompt नहीं करेगी to downshift. But if you want to check that, let me tell that to you. If the speed drops maybe close to 40 kilometers per hour, even now the engine is not asking me to downshift. I am in sixth gear, but let's try and drop the speed even further. And right now you can hear it, the system is prompting me to downshift. तो आपको ये audible beep भी सुनाई देगी. And this will help you get accustomed to this IMT gearbox pretty easily and pretty soon. अब ये जो Hyundai की Venue है, ये जो turbo petrol motor है, we have spoken about this before, लेकिन तभी हमने इसका dual clutch automatic transmission variant चलाया था. It is an exciting motor. It sounds quite good जब आप इसे rev करते हो. When the engine RPM crosses 4000 RPM, I really like it. It sounds quite nice. ज़्यादा rough sound नहीं करती है. And when you are driving it in sedate manner, the engine is very refined as well. ये जो IMT gearbox है, इस गाड़ी में जब आप ये gear selector है, say for example आप पूरी तरीके से shift नहीं करते हो. If I just try and give it a little movement, the TGS, the transmission gear selector, वहाँ पे जो sensor है, it does sense that you intend to make a gear shift और तभी आप engine RPM drop होते हुए notice कर सकते हो. So even though you do not really change the gear and you again release the gear selector and stay in the same gear, you can notice the difference in RPM, you can notice the drop in RPM. तो ये चीज़ जो है आपको explain कर देगी कि गाड़ी जो है किस तरीके से ये सिस्टम इतने आसानी से, इतने सरल तरीके से और इतने जल्दी गियर चेंजेस जो हैं, क्लच मॉड्यूलेशन जो है मैनेज कर रहा है. टॉकिंग अबाउट अदर पॉइंट्स ऑन दिस Hyundai Venue, द स्टीयरिंग व्हील इज डिसेंट. आपको सेगमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये डिसेंटली रिस्पॉन्सिव भी लगेगा जब आपको गाड़ी तेज चलानी है. इट विल गिव यू अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस. द सस्पेंशन सेटअप इज वेरी नाइस एंड प्लांटेड. अभी मैं जब इसे हाईवे पे चला रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है इन टर्म्स ऑफ द फील दैट आई गेट. इट इज नॉट एट ऑल बाउंसी और आपको ज्यादा वॉफ्टीनेस भी महसूस नहीं होगा. द कार राइड्स ऑन 16-inch rims. खराब पैचेस पे से, एकदम बड़े खड्डों पे से आपको थर्ड्स जो हैं वो कैबिन में जरूर फील होंगे और सुनाई देंगे. बट अदरवाइज द राइड क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी लाइकेबल और बॉडी रोल जो है वो भी आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा. इट इज अ लिटिल टॉल बॉय ऑफ अ डिजाइन. ऑफ कोर्स इट इज अ कॉम्पैक्ट SUV, but it is nice and tight. It is sub 4 meters in length, so you will have a lot of fun. So as an overall package, I think that this Hyundai Venue Turbo Petrol IMT SXO dual tone in this sport trim is quite a good package and I really like this. अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको वीकेंड पे एंजॉय करनी है, आपको मैनुअल कंट्रोल चाहिए ऑन द गियर बॉक्स, दिस डेफिनेटली इज अ गुड चॉइस. आपको एक 7-speed ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ऑप्शन तो मिल ही रहा है ऑब्वियसली. वहाँ पे आप मैनुअल गियर चेंजेस भी कर सकते हो. बट इफ यू आर अ सकर फॉर मैनुअल गियर बॉक्सेस, दिस इज द बेस्ट डील. दिस इज द स्मार्टेस्ट डील. इंडियन मार्केट में और कोई भी मैन्युफैक्चरर अभी तक आपको ये IMT गियरबॉक्स ऑफर नहीं कर रहा है. Of course, the Kia Sonet is going to come with the same engine and IMT gearbox as well, because the Venue and the Sonet are siblings. तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए क्या लगता है आपको about this Hyundai Venue IMT. Do you like it? Do you dislike it? Do you think this is exciting or not? If you will buy this,
what will be your primary use? क्या आप इसे हाईवे पे इस्तेमाल करने के लिए खरीदना चाहते हो या आप इसे सिटी में ड्राइव करने के लिए खरीदना चाहते हो? गुड बाय. सब्सक्राइब कीजिए शिफ्टिंग गेयर्स के चैनल को, प्रेस द बेल आइकॉन, स्टे नोटिफाइड, ऑलवेज ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट्स, say no to over speeding, say no to driving on triple digit speeds all the time. It is just adding to your stress when you are behind the wheel. Goodbye.